हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं काफ़ी कॉन्टेस्टेड टॉपिक जीएसटी ऑन लिक्विडेटेड डैमेजेस, कैंसलेशन फीस, लेट फीस, पेनल्टीज, फॉरफीचर ऑफ अर्नेस्ट मनीज, जो कि काफ़ी कॉन्टेस्टेड है। उस पर रिसेंटली CBIC सर्कुलर आया डेटेड 3 अगस्त 2022। They have issued a clarification on these aspects and clarified the scope of एंट्री 5(2) ऑफ शेड्यूल 2 ऑफ CGST एक्ट। फ्रेंड्स देखते हैं कि एंट्री 5(2) ऑफ शेड्यूल 2 ऑफ CGST एक्ट क्या कहता है। इट प्रोवाइड्स डिक्लेयर्ड सम एक्टिविटीज़ हैज बीन डिक्लेयर्ड टू बी सप्लाई ऑफ सर्विस। अब वो कौन सी एक्टिविटीज़ हैं वो डिस्कस करते हैं। इट सेज एग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एक्ट। कोई एक्ट ना करने के लिए आपको कोई कंसिडरेशन मिलती है। टू टॉलरेट एन एक्ट और सिचुएशन और टू डू एन एक्ट। इट हैज़ बीन स्पेसिफिकली डिक्लेयर्ड टू बी सप्लाई ऑफ सर्विस। एग्जाम्पल लिखते हैं रिफ्रेन फ्रॉम एक्ट लाइक नॉन कम्पीट एग्रीमेंट्स। बिल्डर एग्री करता है लेस फ्लोर बनाने के लिए जस्ट टू प्रोटेक्ट द नेबरिंग प्रोजेक्ट सनलाइट, और मैन्युफैक्चरर रेस्ट्रिक्टिंग वर्किंग आवर्स सो डैट उस टाइम पे नॉइज़ कम हो। तो दीज एक्ट्स वो करने के लिए उनको कंपनसेशन मिलता है। डेट इज एग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एक्ट। टू टॉलरेट एन एक्ट और सिचुएशन लाइक शॉपकीपर अलाउज शॉपकीपर होकर ऑन दिस पेमेंट, और RW अलाउ करता है स्कूल्स को लाउड स्पीकर यूज़ करने के लिए मॉर्निंग प्रेयर्स के लिए। फॉर डैट दे में डिमांड सम पेमेंट और कंपनसेशन, so that will be chargeable to GST because that has been specifically declared to be supply of service. Similarly, obligation to do an act like industrial unit thou within permissible limit of its emissions or discharge and not legally liable to operate any equipment still installs an equipment on the insistence of the neighboring RWA. So whatever compensation they have received to do this act, that will be chargeable to GST. Now there's different payments that are made or that are received or that are deducted in the guise of this entry in Schedule 2 of GST Act. There are a lot of litigations are coming in. Let us see all these payments. Like forfeiture of earnest money for breach of agreement to sell. Like इमोल प्रॉपर्टी के लिए जब हम अर्नेस्ट मनी देते हैं वो फॉरफिट हो जाती है, क्या उस पर GST लगेगा? फॉरफीचर ऑफ डिपॉजिट फॉर नॉन परफॉर्मेंस ऑफ सक्सेसफुल बिडर, चेक डिसऑनर का फाइन, पेनल्टीज फॉर वॉल्यूशन ऑफ लॉ, फॉरफीचर ऑफ सैलरी for non or recovery of bond amount for non serving the minimum period notice period, liquidated damages for delay in completion of contract. So CBIC has clarified these payments are not for tolerating the breach of contract, not for tolerating any act. These are for not tolerating the breach of contract. These are the compensation for losses suffered. These are the penalty for discouraging breach of contract and not supply of service but a mere flow of money. So CBIC has given a very beautiful clarification and also instructed a field officer to see all these are not charged to GST and are unnecessarily harassed the taxpayer on a case to case basis. Other payments also we will discuss. Let us see. Late payments allowed with interest oblique fees, pre-closure of loan, उसमें भी कुछ चार्जेस लगते हैं, कैंसिलेशन ऑफ इंटेंडेड सप्लाई अगेंस्ट पेमेंट ऑफ फीस, नॉन रिफंडेबल टिकट की जब हम कैंसिल करते हैं तो अमाउंट फॉरफिट होता है। सिमिलरली सिक्योरिटी डिपॉजिट और अर्नेस्ट मनी फॉरफिटेड इन केस ऑफ होटल अकोमोडेशन, ट्रैवल टूर ऑपरेटर्स, compensation for not collecting toll charges, cancellation charges of railway tickets. These
are the facility granted by supplier, and these shall be chargeable to GST and will not be exempt from GST. These are not for non breach of contract, these are the facility. Like इस सर्कुलर में जिसने लॉन्ग पेंडिंग लिटिगेशन से कम कर देगा और न्यू लिटिगेशंस ना आए, तो दिस इज अ क्लैरिफिकेशन, सो इट विल डेफिनेटली हैव अ रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट. दिस इज नॉट एन अमेंडमेंट. थैंक यू फ्रेंड्स.